hypothesis testing problem. So any statement or any claim about the population is called hypothesis. Okay. So the characteristics of population, if the characteristic of population is shown by anything, that thing is called parameter. So to check that whether the characteristics of population is satisfied or not, we need to draw a sample from the population, and any characteristic of this sample is called a statistic. Characteristics of population is called parameter, and characteristics of sample is called a statistic. Okay. So here we have given a few examples of hypothesis testing. Number one, we consider a teacher assumes that 60% of his college students come from lower middle class family. This is an assumptions of a teacher. We do not know whether this is true or not, whether this is true or false. We don't know about anything. But since he has assumed something, so on the basis of the appearance of students, maybe or maybe something else, but since he has assumed or he has said anything, so this is a hypothesis. Now we need to check this, and we will, when we need to check this, we will check whether this is true or false, and we will say this on the basis of data. Second thing, in NEET exam, the performance of girl students was better than the performance of boy students. Okay, we say this, but we have to look out the results. So when we see the results, then we see, I mean, whose marks are more. Whether girls, there are more girls students who have qualified the exam, and there are more boys students who have qualified the exam. So we will check this. Okay, and the third one is approximately 15% of Indian have diabetes. So these things are statements. They are statements. So any statement or claim about the population is called hypothesis. Is this clear? So hypothesis is of two type, null and alternate. So we divide it into two parts. One is null hypothesis and second one is alternative hypothesis. In null hypothesis, we think that the two objects are not different, they are same. This is called the hypothesis of no difference also. Just suppose if we are comparing in both boys and girls student, so in null hypothesis we say that the performance of both, mean boys and girls student was same, mean दोनों के जो performance है वो equal है. In alternative we are saying that the girls performance was better than the boys. So this is null hypothesis. Null hypothesis is always talks about equality. इक्वल साइन हमेशा इसमें रहेगा. And second thing, the complementary to null hypothesis is called statistics. Sorry, is called alternative hypothesis, and we decide these things on the basis of statistics. Alternative hypothesis is very important because it decides the types of test. I mean, which types of test is there? Whether it is left-tailed or right-tailed or two-tailed test. Okay. So why it is important? Because when we see p-value, this gives us the idea. I mean, what should be our p-value. In next slide, I will show you that what is our p-value and how to see this. So when we say that one thing is less than the other thing, the average marks of boys was less than the average marks of girls. So mu1 is less than mu2. So that's mean mu1 is less than. Less than mean we are going on the left side on real line. Real line आप लोगों ने देखा होगा. On left this is minus infinity, and on right this is positive infinity, and in between the zero. So when we say that anything is less than, so that's mean we are talking on the left side of the real line. And when we say that it is greater than something, so we are talking about the right side of the real line. So when we say mu1 is less than 0, mu1 is less than mu2, so that's mean we are talking about the left hand side. So that's why this test is called left tailed test. Okay.
And when we say mu1 is greater than mu2, mean we are saying that first group is the average marks of first group is greater than the average marks of second group. So that's when we are saying that the this is right tail, mean the value of first group will be on the right side of the first group. And when we are not sure about, we say that we don't know whether which one is more. It may be mu1, it may be mu2. So mu1 is not equal to mu2. Either of the two may be greater than or less than. Okay. So this is called two-tailed test. We see this. See this blue area is called acceptance region and the red area is called rejection region. First one is for left tail because the rejection region, this red region is called rejection region. This region is on left hand side. Okay. And this blue area, this whole area is called acceptance region. If any value of the statistics lies in this region, is called it is lying in the acceptance region. And when it is lying in the acceptance region, so that means we are accepting the null hypothesis. That's mean we fail to reject the null hypothesis. And this shaded region, mean this red area is representing us 0.05 at 5% level of significance. Most of the time we are considering 5% level of significance. That's why we are saying that our p value should be less than 0.05 so that we could reject the null hypothesis. Most of the time we are interested in rejecting the null hypothesis. Why? Because I have said that the average marks of girl students was more than the average marks of boys students. Okay. So here we have seen something, that's why we are saying, and when we are saying, so we want to be right. So if data suggests, so we, if data suggests, then we will reject or accept on the basis of the data. But most of the time we want to that what we said, it must be true. And whenever we are saying on the basis of some ground, we have seen something somewhere, that's why we are saying. So if we have done much more study, then we might be right. And if we have just looked anything and we are saying or we are making any statement, then it might be right, it might be wrong. Okay. So that's why you might have seen, if you have ever went through this these lines, the p value, about p value, so you have seen that if p value is less than 0.05, 0.05 mean that is 5% level of significance. 5 divided by 100, this becomes 0.05. So this shaded region, this red region is called rejection region, and the value, the area or the probability of this is 0.05. So if the value lies in this, so that's mean we are rejecting the null hypothesis. And if value lies in this blue shade region, so that's mean we are accepting the null hypothesis. Okay. In second case, the middle one, this middle one is also the same, but the reverse of the first one. In this, we see the red region on the right hand side. Okay. This is again the rejection region, but here we say mu1 is greater than mu2. That's why this region is our right side. The story is again same. If the p value is less than 0.05, then we reject the null hypothesis. Otherwise, we fail to reject the null hypothesis. And third one, or the last one, is having two tail. Both of them are red. That mu1 is not equal to mu2. So we are not sure whether test would lie which side. I mean, it might be right tail, it might be left tail. So that's why we are shading this one. So when we say 5% to 5% mean 5% is divided into two equal parts. So this becomes 0.025 and this becomes 0.025. But जो हमें आंसर मिलता है वो 5% के हिसाब से आता है. So again we are checking if the p value is 0.05, then we reject the null hypothesis. Okay. So this one is acceptance reason, and this one is rejection, and this one is rejection. So two tail test had two rejection region. One tail test has one rejection region. One tail test is of two type. One is left tail and second is right tail. Okay. Now we see hypothesis example. We have given an example here that a new teaching method is developed
that is believed to be better than the current method. So if this is the condition, so what should be our null hypothesis? Our null hypothesis should be that both of the teaching method are same. Both of the teaching methods are same. That's mean the new developed method is same as the old one. So that means the two methods are same. Alternatively, we say that the new developed teaching method is better than the current method. Okay. So this is the best example. You may take one more example. If we want to compare male and female students in a classroom, so on the basis of their marks, so we see that the marks, we collect the marks of female students and male students. So we say that who is performing better, which group is performing better, whether male group or female group. So here we again set the null hypothesis that the male groups and female groups, both of them are equal, when none of them are outperforming to each other. Okay, so the two groups are performing same, mean दोनों का performance same है, there is no difference between two. And alternatively we say that girls students performance is better than the boy students performance. Okay, so on the basis of null and alternative hypothesis we have two types of error. So type 1 error, when we say that null hypothesis is true, when we say that the performance of the two groups, mean boys and girls, are true, and still we are saying that no, the performance of the two is not same. Mean one of the group is outperforming the other. So that's mean here we are biased, we are making error, and when we are making error, so obviously this is uh, this may relate to any type of error. So first consider this is an error. Okay. Second, we fail to reject the h naught, mean we fail to reject the hypothesis, null hypothesis, when it is false. Suppose that the two groups are not equal, the two groups are not equal, but still we are saying that the two groups are equal. So there is two mistake. First mistake, that when they were equal, then we were saying that no, they are not equal. And second, when they are not equal, we are saying no, that they are equal. So there are two mistakes. One is type 1 error, second is type 2 error. So जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल मानना, दिस इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप उनको नॉट इक्वल नहीं मानते, सो दिस इज अ मिस्टेक. मीन फिर उनको इशू होगा कि हाँ हमें लेट डाउन किया जा रहा है, अननेसेसरी हमें लेट डाउन किया जा रहा है. ओके, मीन दे आर करेक्ट. और जब एक ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरा ग्रुप खराब परफॉर्म कर रहा है, एंड यू आर स्टिल सेइंग दैट द टू ग्रुप्स आर इक्वल, सो दैट्स मीन आपका ये मोटिव हो सकता है दैट यू वांट टू इंक्रीज, मीन आप किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना चाह रहे, दोनों ग्रुप को इक्वल माना. बट here again you are demoralizing the other group. Your motive may be different, but you are demoralizing the other groups. But in first one, the two were same, but you are saying no, that now this one is, mean this mistake is bigger one. You are intentionally not taking them that they are two. Most of the time people are saying no, the two are same. It may be on any gender. Okay, so this one is type 1 error, and the second case is type 2 error. And the probability of type 1 error is called level of significance, what we have fixed 5%. Probability of type 1 error, that's mean we are saying that कि अगर दोनों ग्रुप सेम हैं और उसके बाद भी हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई गलती कर रहे हैं, सो वी आर फिक्सिंग एट 5%. 5% चांस ये हो सकता है कि हम किसी को गलत और सही कर सकते हैं, बट वी आर नॉट अलाउइंग them more than that. So probability of type 1 error is denoted as alpha, and this is type 1, level of significance. And probability of type 2 error is denoted as beta, and 1 minus beta is called power of test. So this should also be high. So here we have two error and two probabilities. So we have fixed one probability alpha, and we are trying to minimize beta. So when we are minimizing beta, so that's when we are maximizing 1 minus beta. Beta जितना छोटा होगा 1 minus beta उतना बड़ा होगा.
दो प्रोबेबिलिटीज को एक साथ हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी हैव फिक्स्ड वन. ओके, आई थिंक वन कैन अंडरस्टैंड the two with this example better. Suppose there is a trial in a court that a man has committed the crime. Then the following table is the best example to show the types of errors. See here, here H naught mean null hypothesis says that the man is innocent. In our judiciary, we say that until proven guilty, the man is innocent. So जब तक किसी के अगेंस्ट में सजा नहीं आ जाती, वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक वो इनोसेंट होता है. एंड H1 the man is guilty. The man is really guilty. So this is our null hypothesis, and we see what is the decision. If the decision in favor of the man, and second thing the decision against the man, there are two conditions. So there is 2 by 2 matrix. We see that first, see this one, the man is innocent, and when the man is innocent and the decision came in favor of the man, and the man is innocent and the decision came in favor of the man, so that's when there is no error. He was innocent and decision came in favor of him, mean he is acquitted. Second thing, the man is guilty. The man is guilty, that means he has committed the crime, and decision came in favor of him, mean he is acquitted. That means this is error. This is error. And then we say that the man is innocent and decision came against the man, mean an innocent man is getting punishment. So this is again an error. And the third one, that the man is guilty, sorry, fourth one, the man is guilty and decision is against the man, so that's when there is no error, mean वो guilty था, उसको punishment मिल गई. Okay, सो यहां से चीज समझ में आ रही है. अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि इनोसेंट मैन को, इनोसेंट आदमी को सजा मिलना ज्यादा खतरनाक है या गिल्टी आदमी को छूट जाना ज्यादा खतरनाक है? विच वन इज मोर सिवियर? आप लोग हैं? Yes, sir. हेलो, विच वन इज मोर सिवियर? So both of them are dangerous only. ओके, In my दैट्स ओके, opinion. बोथ ऑफ देम आर, बट दोनों में से कुछ तो होगा. आप सोचें, एक इनोसेंट है उसको सजा मिल जा रही है, एक गिल्टी है, गिल्टी को आपने छोड़ दिया. इनोसेंट को सजा मिलना ज्यादा खतरनाक है, गिल्टी को छोड़ दिया मे बी वो सुधर जाए या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, ठीक है. लेकिन जो अनटिल अनलेस गिल्टी का मतलब ये है कि बहुत ही बहुत इफेक्टिव हो वो सोसाइटी में, कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव हो कि वो उसकी वजह से, छूटने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर केस अलग है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज नहीं होता है, ठीक है. सो जो इनोसेंट आदमी है उसको सजा मिलना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है, वो बगैर किए सजा भुगतने जा रहा है. सो दिस इज मोर डेंजरस, दैट्स व्हाई वी गिव इन टाइप 1 एरर. और जो गिल्टी है, गिल्टी छूट जा रहा है, दैट इज आल्सो एन एरर, बट दिस वन इज लेसर इन अमाउंट दैट द प्रीवियस वन, क्योंकि गिल्टी है, अगर कोई छूट गया हो सकता है कल को सुधर जाए, ये ये माना जाता है, ये जुडिशरी की सोच होती है, ठीक है. सो यहाँ से ये चीज डिसाइड हो गया, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. सो इनोसेंट को मीन व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी आर रिजेक्टिंग इट, the man is innocent and we are saying no, he is not innocent, so that's why we are committing type 1 error. And when the man is guilty and we are saying no, he is not guilty, that's mean we are again accepting the false null hypothesis, false null hypothesis. So that's it, we are again committing the crime, sorry, error, and that error is type 2 error. Okay,
Then, before going ahead for parametric test, normality and variance equality are important. So, there is one assumption when we have parametric test. Just suppose we have t test, z test, chi-square test, f test, ANOVA, any other test. So, normality is important. Why? Because there is a basic assumption is that the variance or the sorry, the sample is coming from the population which is normal. So population हमेशा normal होगी. So population का data हमारे पास हमेशा होगा नहीं. So we have to check on the basis of given data. So we have to check on the basis of given data or given sample whether this is normal or not. So for that the test is Shapiro-Wilk test. The name of the test is Shapiro-Wilk test, and we set the null hypothesis for this test. That means the data vector is normal. The data vector is normal. Alternatively, we say that the data vector is not normal. The data vector is normal. This is our null hypothesis, and alternatively, we say that the data vector is not normal. So in R, there is a function in the name of the scientist Shapiro. The test is Shapiro.test. The test is Shapiro.test. So we have defined or we have taken a data set from a journal that was published by Altman 1991. This data is taken and this data is energy taken by women, 11 women. So you may screenshot and later practice it. So this is a vector. ये जो एनर्जीज उन्होंने लिया था, मीन जो उन्होंने खाना खाया जिससे एनर्जी जो आ रही है, खाना या कुछ भी जूस लिया, एक्स वाई जी कोई भी चीज़ लिया, सो उससे जो एनर्जी उनको मिल रही है ये उस एनर्जी का डेटा सेट है. ओके, सो दिस इज डेली इनटेक ऑफ 11 women's energy taken data set, and then we are writing Shapiro.test and then supply the name of the vector Shapiro.test, then name of the vector. यहाँ पे हमने daily dot intake लिखा है. We have written daily dot intake, so that's why we are writing daily dot intake. आप कुछ और भी लिख सकते हैं. You may choose any name of your choice. Okay, so we have given these things. See what we are getting. Shapiro-Wilk normality test. Then data is equal to data colon daily dot intake. W is equal to 0. 0.95237 and comma p is equal to 0.6743. See, this value is less than 0.05 or greater than 0.05. This is important. If you know this, then you will be able to interpret the things, interpret the results. Okay, so अपने mic on कर सकते हैं. You may unmute yourself and just tell me at this point what is this value. P value is P value is 0.6743. So that is greater than 0.05. So when the value is greater than 0.05, so it lies in acceptance region. पिन जो हमने blue region दिखाया था, blue region में lie करता है. So when it is lying in blue region, so that's mean we fail to reject the null hypothesis. We fail to reject the null hypothesis. जब वो red region में जाएगा, that's mean the value is less than 0.05, then ये red region में जाएगा. जब red region में जाएगा, then we say that we reject the null hypothesis. And in our case here, the value is 0.6743. So that's mean we fail to reject the null hypothesis, and that's mean therefore the data is normal. Why? Because we have set the null hypothesis H naught, the data is normal, versus H1 mean alternative hypothesis, the data is not normal. So from here this taken data is normal. You may choose any data. If you want to practice, just screenshot it. Okay, then second thing that is important in t-test, we check when we have two samples. So when we have two samples, so we have to check that the variances of both the samples are equal or not. If the variances of both the samples are equal, then we have a different formula for t-test.
And if the variances are not equal, then we have a different formula for test. Okay, one of them is called t test, and second one is one of them is called student's t test, and second one is called Welch test. When the variances are not equal, so they are called Welch test. That's why this test is important. So there are two tests. One is normality of the data, normality of the vector, जिसके बारे में आप टेस्ट करने जा रहे हैं उसको पता होना चाहिए whether this is normal or not. And if there are two data sets, then you would also like to check that both of them are normal or not. So you have to check the normality of both the groups. दोनों ग्रुप्स की नॉर्मलिटी को आप चेक करना है. Then you have to check that whether both the groups have equal variances or not. If the variances are equal, if the variances are equal, then we have t test, students t test. If the variances are not equal, then we have Welch test. This is also called t test. So the formula for this is f test. F test is used to check this, and the test is sigma 1 square over sigma 2 square. Mean variance of one population, and that is divided by the variance of second population. So since this variance is unknown to us, so we will take a sample from the population, and then we'll take calculate s square, s1 square and s2 square, small s1 and small s2 square. So see what are the variance, what is our null hypothesis, that is most important thing. The variances of both the groups are same. Our null hypothesis says that the variances of both the groups are same versus H1, the variances of both the groups are not same. Okay, this is important. आपको दो चीजें याद रखनी है. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ यू डोंट बिलोंग टू स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड, दिस फॉर्मूला इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. The important thing is for you that what is our null and alternative hypothesis and how to use these tests. These things are important. Okay, here we have taken a hypothetical data of male and female's height. Male students and female students के heights को hypothetical data लिया गया है. Okay, so first we defined a vector in R and given the name of heights underscore male. Okay, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, no issue. दिस थिंग इज फ्री. जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपके लिए आजाद हो, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, आप उसका स्मॉल नाम देना चाहो, लार्ज नाम देना चाहो. लार्ज का मतलब होता है दैट यू मतलब इसके नाम को देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. ये हाइट्स ऑफ मेल. अगर आपने एक्स वाई दे दिया होता तो आपको फिर सर्च करना पड़ता है कि एक्स किसका नाम दिया, वाई किसका नाम दिया. ये हाइट मेल लिखने का मतलब ये हो गया कि दैट दिस वेक्टर सेट इज फॉर द मेल्स हाइट and second one is for female side. Okay, and then we have used concatenation function again as we did yesterday. See, and we have combined all the observations. Okay, then we have used var dot test. This is the function var dot test. mean variances का टेस्ट करना है var dot test, और उसके नीचे फिर हमने दोनों वेरिएबल्स को अप्लाई कर दिया है दैट हाइट्स फीमेल एंड देन हाइट्स मेल. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा आप पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में लिख रहे हो, पी वैल्यू आपकी सेम आएगी. ये स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू डिफर कर सकती है, दिस वैल्यू में डिफर. ठीक है, बट योर पी वैल्यू विल बी सेम, आप इसको चेक कर सकते हो. सो फर्स्ट वी हैव डिफाइंड अ वेरिएबल और अ वेक्टर हाइट्स मेल, देन हाइट्स फीमेल, then we are testing variances whether the variances of both the groups are same or not. So we have written var dot test, var dot test, and then supplies the both the arguments, mean both the vectors, and we see f test to compare two variances. Data is equal to heights male and heights female. F value is 1.1559. NumDF mean numerators degrees of freedom. Numerators degrees of freedom, that is 9. Denom mean denominators degrees of freedom is 9. And then p value, that is most important for us, and यही हमें देखना है, इसके सिवा कुछ और नहीं देखना है. ठीक है, so the p value is saying that the value is 0.8327. Again this value is greater than 0.05. So when the value of p is greater than 0.5, that's mean we fail to reject the null hypothesis. We fail to reject the null hypothesis. That's mean we accept the null hypothesis. And our null hypothesis says that the variances of both the groups are same. Null hypothesis says that, say this.
The variances of both the groups are same. So here the variances of heights male and heights female is same. So we may use a t-test, students t-test. If they were not equal, then we will use Welch test. Okay, then t-test for one sample. In this, we in one sample we have a data set, a vector of data set, and then we have this value h naught mu is equal to mu naught. Okay, so first we set the null hypothesis on the basis of given observations. Whatever observations are given, we will set this null hypothesis. Mu is equal to mu naught. Mu naught कुछ भी हो सकती है. Just suppose if we I say that the average male's height or average male's height of North Indian people. Okay, so what is this? I think it is approximately 5'7", 5'8", 5'6", what maybe any number between this 5'8", 5'9", whatever will be the number. So this is 5'8". This will be mu zero. This will be mu zero. So to check this, we will calculate a sample. हम कुछ लोगों को अलग अलग नया नॉर्थ इंडियन की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगहों से हम कुछ लोगों की सैंपल कलेक्ट करेंगे. We have taken some samples from Aligarh, some from Lucknow, some from Varanasi, some from other places, Agra. So कुछ ऐसे collect कर लेंगे, then we will calculate this x bar. We will calculate this x bar, and this should be mu zero, not mu. This should be mu zero. X bar minus mu zero. This should be mu zero. और उसके basis पे then we will calculate s. This s is nothing but the variance of x, and this square root of n. N is the number of sample size. Number of sample size mean number of people in the sample. So जितने लोगों का आपने sample लिया है वो n हो जाएगा. See here, in R we have function t dot test, and t dot test is defined like this way: t dot test, then bracket x. X mean this may be the height. Y, this is not necessary for one sample, and for two sample this is compulsory. Okay, alternative, ये जो आपने पहले देखा ना, क्या नाम है, लेफ्ट टेल्ड, राइट टेल्ड एंड टू साइडेड. So when we have left tailed mean less than mu1 is less than mu2. So we have said this is left tailed, and left tailed is defined here as less because mu1 is less than mu2. And when we say that mu1 is greater than mu2, so we have greater, and then two sided when mu1 is not equal to mu2. So we have to decide what our alternative hypothesis says. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको इस वैल्यू को आपको सप्लाई करना होगा, and this will be decided on the basis of null and alternative hypothesis. First you have to define the null hypothesis, then alternative hypothesis is hidden in your question, it is given there, and then we write paired is equal to true or false, mu is equal to 0, and where dot equal to is equal to false or true or false. ये चीज आपको डिसाइड करना, डिफाइन करना पड़ेगा. ये जो हमने अभी वैल डॉट टेस्ट पे चेक किया था वो यही चीज है, वैल डॉट इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स. अगर दोनों वेरिएंसेस इक्वल हैं देन यू हैव टू राइट ट्रू, अगर वेरिएंसेस अनइक्वल हैं देन यू हैव टू राइट false. Okay, so now we have considered an example. Again, I have taken this example for practice. You may screenshot this number. Here I have taken 12 patients, 12 patients blood pressure data, and they are going under drug therapy for hypertension. Okay, the blood pressure is 183, 152, 178. These are the observations, and then see here it is written on the basis of this we will set our null and alternative hypothesis. What is written? Can we conclude on the basis of these data that the population mean is less than 165? That means the population mean is less than 165. So that's when we are saying that the mu is equal to 165.
population mean mu is equal to 165 versus alternative HA is mu is less than 165. Mu is less than 165. And under the null hypothesis, the test statistics is T is equal to X bar minus 165 divided by S and further divided by square root of n. So see, we have made a vector of these systolic blood pressures observations and given the name systolic BP. And see, these 12 informations are there, stored in this vector. Then we are checking whether this information is normal. I mean, this vector is normal or not. Then we have used Shapiro dot test systolic BP, and this is further with hash. Mean hash mean comment. Hash का मतलब होता है comment. Normality test. So again we see the p value is 0.53. So that is again greater than 0.05. So we see that this systolic blood pressure data is normal. This systolic blood pressure data is normal. Why? Because the p-value is greater than 0.05. So that's mean we fail to reject the null hypothesis. And our null hypothesis says that the data is normal. So here we say that our data is normal. So when our data is normal, so we may use t-test. And we write t-test, t dot test, and then further within bracket we write the vector's name systolic blood pressure, then mu is equal to 165, that is defined in null hypothesis, and then see mu is less than 165. So that's why we are giving in alternative hypothesis alternative is equal to c, within quotes less. These things are important. If you know these things, then it is very good thing. So this is one sample test. I have used t-test to check that whether the population, mean patient's blood pressure is less than 165 or it is 165. So we see there are many things. Again, we focus on t, and the t value is this. P value is this. P value is 0.15. That is again greater than 0.05. So when the p value is greater than 0.05, so that's mean we fail to reject the null hypothesis. So when we fail to reject the null hypothesis, so come to null and alternative hypothesis. See here, we fail to reject the null hypothesis, and our null hypothesis is mu is equal to 165. So that's mean this data mean इस डेटा को जितने भी लोगों को हाइपरटेंशन या अदर चीजें हैं उनका एवरेज ब्लड प्रेशर 165 है, उससे कम नहीं है. ओके, ये उसमें दो होता है 80 एंड 120 नॉर्मल माना जाता है. 80 एंड 120, 80 लोअर होता है, 120 अपर होता है. सो ये जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर अप अपर बैंड. Second example is also taken by the same way. Here we have taken intraocular pressure. I think ये eyes का होता है, eyes के अंदर का जो pressure है उसके लिए है. And here we have taken a larger data set than the previous one. Earlier we have taken 12 patients. Here we are taking 21 observations. Again, to for practice, you should screenshot this data set. And then we have written, can we conclude that? This is important. First everything is given, then see what is the question. So the question is, can we conclude from these data that the mean of the population from which the sample was drawn is greater than 14? So we are saying, we are asking the question कि जहाँ से ये सैंपल लिया गया है क्या उस पॉपुलेशन के आइज का ब्लड इंट्राओकुलर प्रेशर 14 से ज़्यादा है. ओके, so on the basis of this given information, we will set null and alternative hypothesis. So our null hypothesis says that mu is equal to 14 versus mu1, sorry, versus h1 alternative hypothesis, and that alternative hypothesis said that mu is greater than 14. Mean of the population, so mean of the population shown by mu.
So mu is equal to 14 versus mu is greater than 14. Is there any issue in setting null and alternative hypothesis? No. I think you people are too shy to ask the question. No. No, sir. Okay. So you are okay. Good. Again, the formula is same. We have made this. Mean 21 observations was given. So we have made of these 20, combined these 20 observations in a data vector. This is a vector and given the name intraocular pressure. Mean this one. You may give different name as per your choice. You are free. Then again, we are going to test whether this data set is following normality or not. So we have written Shapiro.test intraocular underscore P and then normality test. Here again we focus only on p value and the p value is 0.5941, that is again greater than 0.05. So that's mean the data is normal. If somehow this value is less than 0.05, so that's mean the data is not normal. When the data is not normal, so a person cannot use t test. There is some other test, some other non-parametric test, but they are not under this course. See here, we have assumed, oh no, we have certain null hypothesis mu is greater than 14. Earlier one mu was less than, here mu is greater than. So t dot test, this is the function to test the t-test, and then we have supplied intraocular op, this is our vector name, and then mu is equal to 14, this is our null hypothesis, mu is equal to 14, and alternative is c greater than. So there we are using greater than. एंड अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो जिसमें नॉट इक्वल टू होता, सो हियर वी आर राइटिंग नॉट इक्वल टू टू, सॉरी, टू डॉट साइडेड, टू डॉट साइडेड. Okay, so the value is 0.019, p value is 0.019. So there is a question, this value is less than 0.05 or greater than this one? Less than, sir. Less than. So since this value is less than 0.05, so we reject the null hypothesis. We reject the null hypothesis. Why? Because this p value is less than 0.05, so we reject the null hypothesis and conclude that the intraocular pressure of the population is greater than 14 mmHg. mmHg is the unit of pressure measurement of human bodies. Okay. So now t test for two independent samples when variances are equal. So when variances are equal, the formula is this, but I think this is not important for you. We are just going to the codes. So just few slides above, I have defined heights female and heights male, right? And there I also have checked the homogeneity of the variances. And again, I'm writing the same code here. So the p value is 0.8327. 0.8327. What this mean? We fail to reject the null hypothesis, and when we fail to reject the null hypothesis, so what is our null hypothesis? So we see that both the groups have same variance. So heights female and heights male, both the groups have same variances, mean homogeneity of the variances exist. So when homogeneity of the variances exist, so see, we use this formula t dot test, this is the function, and then we write heights female
heights male, where dot is equal to true, and then alternative C 2 dot sided. We are not sure that whose heights are more, whether it's male or female. So when we are not sure, so we write 2 dot sided. When we are sure, we say that male's height are more than female's height. So male's height is greater than female's height. See here, one important thing also there. Heights female is written first, and then heights male is also written. ये प्रॉब्लम वन वाले में नहीं होगी, टू वाले में होगी. आपको देखना है कि आपने पहले क्या लिखा है. इन जनरल मेल की हाइट ज्यादा होती है, फीमेल की हाइट कम होती है. सो हियर वी हैव रिटन हाइट्स फीमेल. सो हाइट्स फीमेल इज लेस देन मेल हाइट्स. सो अगर आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पे लेस आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, लेस आएगा. और अगर आप इस चीज को चेंज कर दो, आप हाइट्स मेल पहले लिख दो, हाइट्स फीमेल बाद में लिखो. सो दिस इज वेल नोन रिजल्ट. यहाँ पे आपको पता है इसलिए आप कर सकते हो, बट बहुत सारी जगह ऐसी होगी जहाँ आपको पता नहीं होगा. तो आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है और इस चीज को चेक करना है, क्योंकि इससे पी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, इससे पी वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो वी राइट heights female, then heights male, then one additional argument here, that is where dot equal to is equal to true. Where dot equal is equal to true. क्यों? क्योंकि अभी हमने where dot test में चेक किया that the variances of both the groups are same. So when the variances of both the groups are same, so we write where dot equal is equal to true. Then alternative is equal to C, 2 dot sided. Okay. And see here p value. The p value is 0.0014. Again, this value is less than 0.05. So when this value is less than 0.05, so that's mean we reject the null hypothesis, and our null hypothesis says that the male's height and female's heights are equal. And when we are rejecting this, so we are saying that no, the male's height and female's heights are different. They are not equal. Got my point? अब यहां से क्वेश्चन आता है कि किसकी ज्यादा किसकी कम है. सो जस्ट सी द मीन. हियर इट इज रिटन मीन ऑफ एक्स. जो फर्स्ट वेक्टर है उसको एक्स बोला जाता है, और जो सेकेंड वेक्टर है उसको वाई बोला जाता है. सो सेकेंड वेक्टर इज हाइट ऑफ मेल एंड फर्स्ट वेक्टर इज हाइट ऑफ फीमेल. सो सेकेंड की 173.3 सेंटीमीटर है और फर्स्ट की 164.7 सेंटीमीटर है. सो ऑब्वियसली मेल की ज्यादा है फीमेल से. ओके. Then t-test for two independent samples when variances are unequal. So we have defined, or we have generated a data set. We have generated. We have not taken any real number. We have generated from normal population two different data sets x and y. और इनकी वैल्यू सेम आए इसलिए हमने इसको सेट कर दिया है. सेट करने के लिए द फंक्शन इज सेट डॉट सीड वन. अगर आप ये लिखोगे तो वही वैल्यू आएगी जो मेरी आ रही वही आप में भी आएगी. नहीं तो आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार डिफरेंट वैल्यूज आएगी, क्योंकि रैंडम वैल्यू जनरेट करता है. आर नॉर्म लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है रैंडम वैल्यूज. सो हर बार रैंडम वैल्यूज डिफरेंट जनरेट करेगा. ओके. हर बार रैंडम वैल्यूज जनरेट करेगा. तो राइट सेट डॉट सीड वन. आप सारे लोग लिखोगे सेम वैल्यूज मिलेंगी. अगर आप डिफरेंट वैल्यूज लिखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे. जस्ट सपोज आप इसको लिखना भूल जाओ तो आप जितने बार रन करोगे उतने बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे. So here first we are writing x. X is equal to R norm. Mean we are simulating data from normal distribution. 20 mean we need 20 observations, जिसका मीन 2.0001 है और वेरिएंस 1 है. ठीक है. ये इसके लिखने का तरीका है. ये थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन हमने चूंकि जनरेट किया है डेटा तो इसको इस तरह कर लें. नॉर्मल इसलिए लिया है क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मल होती है, इसलिए हमने नॉर्मल लिया है. एंड वाई आप कोई भी डेटा सेट होगा जिसको आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट एनी इशू आप मुझसे पूछ सकते हैं. y इज इक्वल टू आर नॉर्म. 25 ऑब्जर्वेशंस, वी आर टेकिंग 25 ऑब्जर्वेशंस, जिसका मीन 3.5002 होगा और वेरिएंस 4 होगा. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 होगा. ये एस टी बताता है यहाँ जो लिखा जाता है, दैट इज एस टी. ओके. सो एस टी का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस होता है.
एंड देन वी आर चेकिंग वेरिएंस। नॉर्मलिटी इसलिए चेक करें क्योंकि नॉर्मल से लिया है, कैलकुलेट किया, दैट्स व्हाई द डेटा इज नॉर्मल। एंड देन वी आर चेकिंग वेरिएंस डॉट टेस्ट, वेल डॉट टेस्ट वाई कामा एक्स। इनके इसका वेरिएंस, इन दोनों का वेरिएंस इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। So we see the p value is 0.013. So 0.01. So that's mean this value is less than 0.05. So when this value is less than 0.05, we reject the null hypothesis. We reject the null hypothesis. Okay. So when we reject the null hypothesis, that's mean the two samples are not coming from the same population. इन दोनों के वेरिएंसेस अलग अलग हैं, दोनों के मीन अलग अलग हैं। सो दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉपुलेशंस। ओके, sorry, I misinterpreted. uh, yes, the variances of the two are not same. The variances of two are not same. So obviously when the variances of two are not same, so their पॉपुलेशन इज आल्सो डिफरेंट। क्योंकि एक पॉपुलेशन जो होगी उसकी जो मीन और वेरिएंस होगा, होमोजेनिटी उसकी ऑलमोस्ट इक्वली होगी। ठीक है। सो हियर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी कंक्लूड दैट द वेरिएंसेस ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर नॉट इक्वल। देन वी अप्लाई टी टेस्ट, and t test, first we write x, then y. When we are supplying the two vectors x and y, then we write val dot is equal, val dot equal to false, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है। देन वी राइट अल्टरनेटिव इज इक्वल टू सी टू डॉट साइटेड, क्योंकि हमने पहले से डिफाइन नहीं किया है कि दोनों वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, एंड म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। सो ये हमने डिफाइन नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। वी आर अनश्योर। आप तीनों टेस्ट इसमें लगा करके चेक कर सकते हैं, म्यू वन इज लेस देन म्यू टू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। ठीक है। लेकिन आपको जब भी सेट कर चेक कर रहे होगे तो आपको अपने डेटा के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि ये सही है गलत है, मतलब क्या आपके मॉडल के लिए अप्रोप्रिएट है। सो द वैल्यू इज अगेन, p वैल्यू इज अगेन 0.001482, is again less than 0.05. So when this value is less than 0.05, so that's mean we reject the null hypothesis. We reject the null hypothesis. तो इसका मतलब क्या हो गया कि both the groups are different. जो दोनों ग्रुप्स हैं वो दोनों के दोनों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट। एंड आफ्टर दीज टू, अच्छा ये मैंने एक एग्जांपल चेक करने की कोशिश की थी दैट आई कुड फाइंड रियल लाइफ डेटा, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, क्योंकि यहाँ पे जो टी पी वैल्यू जो आ रहा है, दिस पी वैल्यू इज 0.544। सो अगेन वेरिएंसेस ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल, सो यहाँ से हमें नहीं मिल पाया। अगेन वी हैव पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट वो होता है जहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर का डेटा लेते हो, बिफोर एंड आफ्टर का डेटा लेते हैं। सो ये आपके पास एक डेटा है, मतलब किस नाम का डेटा हमने सेव किया है, बिफोर आफ्टर टू, लेट मी चेक दिस। ये एक डेटा सेट है, डाउनलोड्स में है, ये काफी पहले का डेटा सेट होगा। सर्च, सर्च इज नॉट वर्किंग।
ये कोई चीज दूसरा डेटा है, ये कहाँ चला गया? ओके, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बिफोर आफ्टर टू करके ही आया, बट स्टिल ये आ रहा है। ठीक है, एक बिफोर एंड आफ्टर का डेटा है। जैसे सपोज आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो उस ट्रीटमेंट में, जैसे सपोज ब्लड प्रेशर का भी डेटा लिया था, ब्लड प्रेशर का ही ट्रीटमेंट ले लिया। तो आपने ट्रीटमेंट से पहले सबका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। जैसे इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाते हो, दे आर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है। और आप कुछ दिन मतलब जितने बार आप विजिट करोगे, हर बार वो आपका ब्लड प्रेशर लेते हैं। और जब आपको आराम आ जाता है तब भी आप वो ब्लड प्रेशर लेते हैं। तो आपने कोई भी मेडिसिन जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी, उस मेडिसिन को आपने लिया। उस मेडिसिन को लेने के बाद में आपका जो बीपी है वो डाउन हो गया। सो वन इज बिफोर एंड अदर इज आफ्टर। यहाँ पे पेयर टेस्ट के लिए कंपलसरी है कि टेस्ट यूनिट सेम होनी चाहिए। जिस पेशेंट के आपने बिफोर का डेटा लिया, सेम उसी पेशेंट का आफ्टर का डेटा होना चाहिए। This is condition for this parity test. So before and after mean treatment का this is best example. और एक एग्जांपल और था, एनर्जी टेकन बाय वीमेन। आई थिंक अगर वो मिल गया तो वो भी हो जाएगा, यस, प्री एंड पोस्ट, ये दिस वन। ठीक है, आप इसको देख लें। सो प्री एंड पोस्ट, सो ये कुछ वीमेंस का डेटा है जो कुछ मतलब इश्यूज थे जिनकी वजह से ये डेटा लिया गया था, प्री एंड पोस्ट। सो पहले वो कितनी एनर्जी इनटेक थी और बाद में कितनी एनर्जी इनटेक है, इन दोनों की कंपैरिजन करना है, प्री एंड पोस्ट का। सो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस डेटा को आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप। ठीक है, सो प्री एंड पोस्ट वी हैव मेड टू डिफरेंट data vectors. Okay, so pre and post, then we are going to check that whether there is any significant difference between these two or not. So t dot test, then pre comma post, then paired is equal to true। ये एक चीज आर्गुमेंट आ गया है, बाकी चीजें खत्म हो गई। पेयर्ड इज इक्वल टू, सो द वैल्यू इज 3.059 e -07। सो जब भी इस तरह का डेटा आपको नजर आए, मीन e, so that's mean e -07, that's this mean 10 to the power -7। so 3.059 into 10 to the power -7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 to the power 7 से आप 3.059 को डिवाइड कर रहे हैं। दैट्स मीन कि जीरो के बाद में 6 प्लेसेस तक, सॉरी, डेसिमल के बाद में 6 प्लेसेस तक जीरो लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल राइट 3 लाइक दिस, 0.00000 एंड देन 3059, इस तरीके से लिखा जाएगा। सो दैट्स मीन दिस वैल्यू इज टू स्मॉल। जब भी होगा इसका मतलब हमेशा यही होगा। ठीक है, सो प्री एंड पोस्ट में ये चीज़ हमेशा आएगी। और जब भी आप टेस्ट यूज कर रहे होगे तो अनफॉर्चुनेटली मीन अभी तक नहीं आया था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। 3.059 ई -07, ई डैश नहीं है, ई माइनस है। एंड दिस मीन्स दिस वैल्यू इज टू स्मॉल, द वैल्यू ऑफ पी इज टू स्मॉल। बहुत छोटी वैल्यू है, मीन दिस वैल्यू इज लेस देन 0.05। so when they get this value, so that's mean this value is less than 0.05, so that's mean we reject the null hypothesis। इसका मतलब ये हो गया कि किसी प्रॉब्लम के पहले और प्रॉब्लम्स ठीक होने के बाद में जो प्री और पोस्ट एनर्जी टेकन बाय वीमेन था, वो दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस होगा, दैट द एनर्जी टेकन बाय वीमेन एट प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट इज सेम। यहाँ पे होगा क्या, एनर्जी टेकन बाय वीमेन एट प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट इज सेम। ओके, अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, नो, दे आर नॉट सेम। या फिर ये हो सकता है, एनर्जी टेकन बाय पोस्ट ट्रीटमेंट इज लेस देन द प्री ट्रीटमेंट। कुछ भी हो सकता है, आप उसके हिसाब से अपने डिफाइन कर सकते हो, इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मीन आपको अंदाजा होगा व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, सो यू नो व्हाट इज योर null and alternative hypothesis, and on that basis you may set this। So here we reject null hypothesis, and null hypothesis says that they are not equal. So energy taken by them. Oh, acha, okay. This data is pre and post menstrually. Mean energy taken by pre menstrually and post menstrually. This is what, not there was no illness, I think, because of this. Okay.
So I have discussed three types of t-test. T-test for one sample, t-test for two sample when the variances are equal, t-test for two samples when variances are unequal, and t-test for paired t-test when we have same units. Pre and post information is available. So is there any question? Yes, no? Silent means no. So next is correlation analysis. When we have two variables, so we need to check the correlation between them. Just suppose if we are giving the medicine, so whether the blood pressure is getting down or not. So if we are supplying the medicine, so obviously the blood pressure should go down. So we have this value and we calculate the correlation. So when we are increasing one, when we are supplying tablets, one daily, so we are giving more tablets. So when we are increasing the doses, so say the blood pressure is getting down. So there is a correlation between two, but the correlation is negative because when we are increasing one, other is decreasing. When we are increasing one, the other is increasing. That's when there is positive correlation. When we are increasing one, the other is decreasing. So there is negative correlation. Okay. When we are increasing one and there is no effect on the others, so that's when there is no correlation. So if we have calculated some correlation and we want to see that whether this correlation is significant or not, for that the formula is this. So it is not sufficient to just calculate only correlation. When we have calculated correlation, we need to check that whether this calculated correlation is significant or not. So for that we check this. T is equal to R into square root of n minus 2 divided by square root of 1 minus r square, where r is the sample correlation coefficient and n is the sample size. For that, the function to calculate the correlation, the function is COR, core, and then we write female's height and male's height. We are going to calculate the correlation between these two, and the correlation is 0.553981. This is the calculated correlation between female's height and male's height. Then we want to test that whether this correlation is significant or not. For that we write core dot test, and then female's height and male's height, and then method is equal to Pearson. जिस मेथड से पेयरसन है स्पेयरमैन है, अगर रैंक कोरिलेशन है तो आपको स्पेयरमैन यूज करना पड़ेगा, और अगर सारे के सारे नंबर्स कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, कंटिन्यूअस डेटा है, हाइट जैसे कंटिन्यूअस होता है, सो आप पेयरसन से करो. ठीक है. So the value is 0.09659. Again, the value is less than 0.05. So when the value is less than the value is greater than 0.05, because the value is 0.09. So when the value is 0.09, so that's mean the value is the p value is greater than 0.05. So we reject the null hypothesis. When we reject the null hypothesis, so that's mean the correlation is zero. The correlation is zero mean the above calculated correlation is insignificant. देखो correlation आया है, calculate करने के बाद correlation आपको 0.55 आ रहा, but still this test says that this correlation is insignificant. When this correlation is insignificant, so that means the correlation between them is zero, negligible. You can avoid them, you can ignore them. Okay. Again, another data is taken from the R data set, and the name of the data is women. The name of the data is women, and women's height and weight are calculated. Sorry, extracted. Women, this is the data set name, and then dollar height and dollar weight. Dollar is used to extract the data from a data set. So height and weight, they are extracted. Then we are writing core height weight,
and then we see the correlation between the two is 0.99. 0.99. So that's mean the correlation between height and weight is high or very high. This is approximately 1. So again we are using core dot test to check that whether this correlation is significant or not or insignificant. Then we have written height, core dot test, height, weight, and method is equal to Pearson. Method is equal to Pearson. Then we see this way. The p-value is 1.091 e minus 14. That's mean 1.091 इंटू 10⁻14। इसका मतलब ये हो गया कि डेसिमल के बाद 13 प्लेसेस तक जीरो होगा, उसके बाद 1 आएगा। सो दैट्स मीन दिस वैल्यू इज टू स्मॉल, दिस वैल्यू इज टू स्मॉल एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 0.05। So when this value is less than 0.05, so that means we reject the null hypothesis. And when we reject the null hypothesis, so we conclude that this correlation is significant. This correlation is significant. Is there any question? No. Next one is ANOVA. When we have two groups, then we use t-test. When we have two groups to compare, then we use t-test. When there are more than two groups, whether 3, 4, 5 or any number, then we will use ANOVA test. Okay, then we will use ANOVA test, and for that the function in R is AOV. This is too simple. The name of the function is AOV. ANOVA function is used. We have seen the chick weights yesterday, this chick weights data, and this data was recorded on the basis of feeds. उनको कौन कौन से feeds दिए जा रहे थे, तो कैसीन था, हॉर्स बीन और सोयाबीन और sunflower, meat ball, there were many. Let me show you how many. Yes, see here the structure of chick weights is this, and then we see level of this feed. So this one is, see how many of them are there: casein, horse bean, linseed, meat meal, soybean, and sunflower. Okay, so before going ahead, we see that the weight for all, the weight for all the feed is equal. मीन जितने भी फीड्स हैं, यहाँ पे दो से ज्यादा फीड हैं, कैसीन, हॉर्स बीन, दो दो चार दो छः, सिक्स 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 फीड्स हैं. So we are saying that the weight after eating these meals of the chicken, the weight of the chicken after eating these meals or these feeds are same. मीन कोई भी फीड ऐसा नहीं है जो कम और ज्यादा कर रहा है, सारे के सारे इक्वल कर रहे हैं. अल्टरनेटिवली वी से दैट एट लीस्ट वन ऑफ द फीड इज गिविंग मोर वेट देन द अदर्स. ये इसका नल और अल्टरनेटिव होता है. अल्टरनेट नल में सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, सबका इफेक्ट इक्वल होगा. अल्टरनेटिव में कम से कम एक ऐसा होगा जिसका इफेक्ट इक्वल नहीं होगा. इसके पहले सबसे अच्छी चीज ये रिकमेंडेड है दैट वी शुड मेक अ बॉक्स प्लॉट. सो द फंक्शन फॉर दिस बॉक्स प्लॉट, और आपको क्या चेक करना है, वेट. सो फर्स्ट वी राइट वेट एंड देन टिल्ड. शिफ्ट के साथ में वन के पहले जो नंबर है उसको शिफ्ट के साथ में आप लगाओगे तो ये टिल्ड आता है. ठीक है, शिफ्ट एंड देन टिल्ड एंड देन राइट feed and then comma data is equal to chick weights. Okay, then enter. We have this plot. Okay, so आप देखो यहाँ पे कैसीन, ये जो कल मैंने बताया था, ये जो थिक लाइन है, थिक लाइन, दिस इज द मीडियन लाइन. ओके, सो आप देखो कैसीन में जो मीडियन है ये 350 के अराउंड आ रहा है वेट, 350 पाउंड, या हाँ पाउंड नहीं होगा. और कैसीन के बाद नेक्स्ट है हॉर्स बीन. हॉर्स बीन में 150 के अराउंड है. सो आई थिंक हॉर्स बीन आप दोगे नहीं हॉर्स बीन फीड देने से, क्योंकि इसका वेट अराउंड 200 कम है, 200 पाउंड कम हो रहा है. ठीक है. थर्ड देखो आप लिनसीड, लिनसीड दोगे तो आप 200 to 250 के बीच में ये कुछ नंबर आ रहा है. ठीक है,
एंड लिंसीड के बाद मीट मील पे 250 एबव आ रहा है, देन इट इज ओके, आप इसको दे सकते हो। देन सोयाबीन, सोयाबीन पे अराउंड 250 के क्लोज आ रहा है। एंड लास्ट वन इज सनफ्लावर, सनफ्लावर में जो है वो 300 टू 350 आ रहा है। सो यही होता है कि आप ऐसा फीड दोगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करें। जो चिकन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करें, जितना ज़्यादा वेट गेन करेंगे आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। सो आप चीप चीप जो होगा, जो सबसे चीप होगा इनमें से फीड, उस फीड को लेकर के आओगे, सबसे सस्ता जो फीड होगा उस फीड को लेकर के आओगे, और उसके साथ में ये होगा कि सबसे ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो, आप उसी चीज़ को दोगे। इसीलिए स्टडी है कि कौन सा फीड आपको चिकन को देना चाहिए। ठीक है, सो वी सेड दैट नल हाइपोथेसिस, सारे सीड से हमें इक्वल वेट मिल रहे हैं। एंड अल्टरनेटिव वी से दैट कम से कम एक सीड ऐसा है जिससे हमें डिफरेंट वेट मिल रहा है। सो वी राइट डेटा, डेटा ही हमने रीड किया है। स्ट्रक्चर मीन हमें ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा डेटा नेचर क्या है। सो ये वी रिसीव डेटा डॉट फ्रेम 71 ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, एक वेट है दूसरा फीड है, और जो वेरिएबल्स हैं वो आगे डिफाइंड है, वेट ये न्यूम एन यू एम नंबर, नंबर है, मीन दिस इज कंटिन्यूअस नंबर। एंड फीड इज फैक्टर, फैक्टर कितने फैक्टर हैं, 6, 6 लेवल्स हैं फैक्टर के, 6 लेवल्स हैं, और वो जो 6 फील्ड्स टाइप है वही इसके लेवल्स हैं। देन वी आर फिटिंग एम चिक, मॉडल ऑफ चिक ए ओ वी, मीन इनोवा मॉडल, एंड वेट। देन दिस इज टिल्ड, टिल्ड मैंने आपको बताया कैसे इस्तेमाल करना है। शिफ्ट और वन से पहले जो नंबर है, वन से पहले जो बटन है उसको आपको दबाना है, दोनों एक साथ, ये नंबर आएगा फीड। देन डेटा इज इक्वल टू चिक वेट्स, data is equal to chick weights, and then summary of this model. So summary of this model shows first is feed, feed 6 थे, इसको दिखाएगा, then residuals दिखाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ गिवन है, we don't focus on this, just come to p value, and the p value is 5.94 into 10 to the power minus 16। इसका मतलब ये हुआ 5.94 into 10 to the power minus 16, and this value is too small, and this value is too small, so we reject the null hypothesis। और null hypothesis हमारा क्या था, that all the feeds are giving equal weights। so सारे feeds से equal weight हमें नहीं मिल रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है, ये हाईली रिजेक्ट कर रहा है, ये हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सो दैट्स मीन वी आर सेइंग दैट एट लीस्ट वन ऑफ द फीड फैक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो जब आपको ये आंसर मिल गया कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सो यू आर नाउ इंटरेस्ट दैट विच वन इज डिफरेंट एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी नीड अ पोस्ट हॉक टेस्ट, एंड नेम ऑफ दैट पोस्ट हॉक टेस्ट इज कॉल्ड टुकी HST। Tukey HST. Tukey is the scientist name, and HST mean highly significant difference test. Okay. So write Tukey HST and then write mchick। और इस पूरे को हमने इसमें कर दिया ताकि ये यहाँ पे प्रिंट हो जाए। इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थी जो सारी पूरी एक स्लाइड पे अभी भी नहीं आ पाई हैं, हमने इसको बचाने के लिए किया था। ठीक है, एंड देन सी देर आर लॉट हॉर्स बीन एंड कैसिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड द लास्ट वैल्यू पी ए डी ADJ mean adjusted p value। so this p value is 0, this p value, first p value is 0, so that's mean horse bean और कैसीन इन दोनों में डिफरेंस है, हॉर्स बीन और कैसीन इन दोनों फीड्स में डिफरेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। देन वी सी लिंसीड एंड कैसीन, लिंसीड और कैसीन की वैल्यू कितनी है, 0.000210। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा नंबर्स हैं सो इट इज़ टफ फॉर अस टू फाइंड आउट। अब इसके साथ एक चीज़ ये करते हैं कि इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको प्लॉट करने के बाद मे भी हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। सो लेट मी चेक हाउ टू डू दिस। then okay, all the values are given, then we have this value and then plot this। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, इसको आप ध्यान दें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँ। एंड दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे।
सी बीच में ये जो जीरो पे लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ नो सिग्निफिकेंस, लाइन ऑफ नो सिग्निफिकेंस। तो ये जितनी लाइन कट हो रही हैं इस जीरो से, इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। और जितने ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जितनी दूर होंगे इस जीरो से, वो उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, वो ग्रुप उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। सो सी दिस फर्स्ट लाइन इज सिग्निफिकेंट। See this second line is also significant. See this third line is cut by this horizontal, this vertical line. So that's why this is insignificant. ये जिन दो के बीच की डिफरेंस की बात कर रहा है वो insignificant है. Then see fourth line is also away from this vertical line. So this is also significant. Fifth line, this is cut by this value. और ये देखें अगर आप, तो ये बहुत क्लोज है, इसका जो मिड वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, ये जीरो के बहुत क्लोज है। दैट्स मीन दिस बिकम्स हाईली इनसिग्निफिकेंट। इसका नेक्स्ट वन इज आल्सो कट बाय दिस लाइन, सो ये भी इनसिग्निफिकेंट है। देन जितनी वैल्यूज आपको नजर आ रही है, नेक्स्ट थ्री इज अवे फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन, सो द थ्री आर significantly different from each other, but see this one is away एंड दिस वन इज क्लोज। सो जो ज्यादा क्लोज है वो कम सिग्निफिकेंट है, जो ज्यादा दूर है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सो अंडरस्टूड। यहां से आप ये देख लोगे कौन सा डेटा है कौन सा डेटा नहीं है, एंड देन मीन कौन सी वैल्यूज हैं, एंड देन कम टू दिस वन। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा था कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, बट आपको यहाँ से ये नहीं आइडिया मिल रहा है कि कौन सा किससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, कौन सा किससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। ये वाला आइडिया सिर्फ आपको यहाँ इस ग्राफ से ही मिलेगा कि कौन सा ग्रुप किससे सिग्निफिकेंट है किससे कम सिग्निफिकेंट है। और इन दोनों को कंबाइन जब करोगे, इस रिजल्ट को, ऊपर वाले इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को, तो आपको आंसर मिलता जाएगा कि कौन सा किसका आंसर है। सो एनी क्वेश्चन? I think I should stop here. If you have any question, you may ask. Okay, I think there is no any question. Okay, sir. Okay. Thank you very much, and thank you Welcome, sir. everyone for attending this wonderful workshop. We will send you the certificate on your registered email ID tomorrow or after tomorrow. Okay. We also provide the video recording of this. Okay. Okay, everyone. Okay, sir. I think there is Okay, no ठीक है. question. There is no question. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, ठीक है. Thank you. Thank you. Welcome, sir.